Assalamu alaikum, dear students of class 9. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. We are doing the exercise of force and laws of motion. Force and laws of motion. हम इसके exercise के question कर रहे हैं. Today it is the turn of question number 8. Question number 8. Page number 37. Question number 8, page number 37. An automobile vehicle has a mass 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if its velocity is to be stopped? If the vehicle is stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. Question number 8. पहले हम लिखेंगे what is given. Given is mass of vehicle. Mass of vehicle, that is M, is equal to 1500 kilograms. 1500 kilograms. Acceleration in the change in velocity. Acceleration A is also given. Negative acceleration means decrease in velocity. That is equal to minus 1.7 meter per second square. क्योंकि ये वहीं से कह रहा है कि negative acceleration is created. That means force is applied to create a negative acceleration. Negative acceleration means force is applied to decrease its velocity by a rate of 1.7 meter per second square. What we are supposed to find out? Force between vehicle and the road. Therefore, force between vehicle and road, that is F. यह हमें निकालना है. It is one now easy. By second law of motion. By second law of motion, we have F is equal to M into A. Here F is equal to what is mass? It is 1500 into A minus 1.7. ठीक. अब यहाँ से आप खुद कीजिए. F is equal to 1.7 into 1500 आप कीजिए. वहाँ पे निकलेगा माइनस. वो डैश आप खुद निकालिए. Newton. That will be the answer. Minus sign indicates that the force is resulting in decrease. Minus sign indicates the decrease in velocity. Minus sign indicates that force is acting in opposite direction to the motion of the vehicle. To the motion of vehicle. यानी माइनस साइंस इंडिकेट करना कि यूथ फोर्स अत पे एक्सर्ट गसान अत बॉडी पे मगर कहाँ डायरेक्शन में इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ दिस व्हीकल. ये आप खुद निकालिए. आप फोर्स इनको मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा आपको ये फोर्स. पेज नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी इज v, मोमेंटम का बराबर है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, mv इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इसी तरह शॉर्ट आंसर है. यूजिंग एन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. ये समझना है. एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक. अब क्या कहता है? Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? यानी यहाँ पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए. कितना फोर्स? 200 न्यूटन. बट जो ही हम आगे बढ़ाएंगे what will happen? Same force यानी frictional force गस अत पे exert. कोता frictional force गस अत पे exert? Same force. To every action there is equal but opposite reaction. तो रिएक्शन फोर्स जो इसका होगा वो भी कितना होगा? 200 न्यूटन. तो सेम फोर्स बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये टेबल्स दिमो तक अगर 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना ब्रोह पकुन
Ishin pagan kehen. Kaz? Because same force is acting in the opposite direction on the body. So force pushes, such a force of friction offered by the surface on the cabinet. हम इसको ऐसे लिखते हैं, to every action there is equal but opposite reaction. Hence, same force of 200 Newton will be exerted on the cabinet. Will be exerted on the cabinet in opposite direction. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 is two objects each of mass 1.5 kg. दो objects हैं. Let two objects are A and B. Let two objects are A and B. A and B. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? That इनका both mass of A is 1.5 kg, B is having ये हम लिखेंगे having mass 1.5 kg each. यानी दोनों का मास एक जैसा है 1.5 kg. ठीक. Moving on the straight line but in the opposite direction. ये move करते हैं on the same line but in the opposite direction. Say for example this is A and this is B. It is moving towards B, this is moving towards A. ठीक. Let the mass of A is m1, mass of B is m2. Velocity इनकी, let initial velocity of this is u1, initial velocity this is u2. ठीक है. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. क्या कहता है? The velocity of each object is 2.5 meter before collision. तो initial velocity इनकी दी गई है. Here initial velocity is 2.5 meter per second. ये में initial velocity 2.5 meter per second. तो हमें क्या निकालना है? After some time they will collide. After collision, what will be the velocity of the combined objects after collision? हमें ये निकालना है what will be the u velocity, that is v1 and v2. v1 plus v2 इनकी combined velocity क्या होगी after collision? Let two objects are A and B having mass m1 1.5 kg each. ठीक. Let m1 is the mass of, इतना लंबा नहीं खींचेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे initial velocity, initial momentum of A. Initial momentum of A. फिर आप ऐसे ही बनाएंगे ताकि आपको ये समझ आए. That is equal to m1 u1 is equal to m1 into u1. m1 कितना है? m1 is 1.5. u1 is given in the question, that is into 2.5. 2.5. ठीक. 1.5 into 2.5 कितना आएगा? 5 5 5 are 25. 5 1 are 5. 5 is गई 7. 5 2s are 10. 5 5 are 25. 5 1s are 5. 1 is 7. 2 5s are 10. 2 1s are 2. 5 7 3. 3.75. That is equal to 3.75 is the total momentum of this body A before collision. Shabash. Initial momentum of B is equal to m2 u2. That is equal to 1.5 into 2.5. That is also equal to 3.75. ठीक. Total momentum of A and B before collision is equal to m1 u1 plus minus m2 u2. Why? Because they are moving in the opposite directions. Momentum आशे में बराबर, but their momentum is acting in the opposite direction. m1 u1 in the right direction, m2 u2 in the opposite left direction. Second how is minus. ठीक. That will be
और साथ बराबर m1u1 प्लस इंटू माइनस गो माइनस m2u2 शाबाश और m1u1 सो कोता ने सो कोता द्रामत 3.5 minus 3.5 that is equal to 0 but therefore total momentum of A and B before collision is 0. ठीक, when before collision momentum is 0 by law of conservation of momentum shabash according to law of conservation of momentum according to law of conservation of momentum the final momentum the total momentum of both A and B should be क्या कैसे आसन 0 क्योंकि total momentum before collision is equal to total momentum after collision that is the law of conservation of momentum हमने already derive भी किया है इसलिए अगर पहला momentum दोनों bodies का 0 है then the total momentum after the collision should also be equal to 0 therefore तेरे क्या है शिकार पर momentum 0 when velocity will be 0 क्योंकि mass का 0 की तेरे क्या 0 velocity therefore the combined velocities of both bodies will be 0 and hence the bodies will come to rest. Is clear करना that when velocity is 0 that means they will come to the rest. And now question number 13 ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 12 में बाद समझाऊंगा वो थ्योरेटिकल है A hockey ball of mass 200 grams traveling at a speed of 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along the original path with a velocity of 5 meter per second. यानी इस कारण और चीज़ hockey ball तच mass 200 ग्राम speed तच इवन 10 meter per second hockey players तक रकावन पच्चीस वापस त्रावन दा वापस अ डायरेक्शन में ठीक यानी speed तक गसा 5 meter per second अच्छी वनन calculate अगुना तो momentum change यानी और momentum was at your momentum goes change अच्छी can calculate the momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. शाबाश given mass of hockey ball शाबाश कितना है 200 grams 200 grams or that is equal to 200 divided by 1000 200 divided by 1000 ठीक 0 कैंसिल अब 2 divided by 10 kilograms हम ऐसे भी रख सकते हैं शाबाश initial velocity of ball पहले क्या velocity थी initial velocity of ball is equal to 10 meter per second therefore initial momentum of ball is equal to mass into velocity that is 2 divided by 10 into 10 and 10 gets cancelled that is equal to 2 meter per second ठीक sorry 2 kg meter per second is its initial momentum ठीक है now final momentum पहले लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी, जब इसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनती है बॉडी की? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस कहाँ से आ गए? शाबाश, माइनस क्या गो इन द यूज बिकॉज द बॉल रिट्रेसेस इट्स पाथ, बॉल यह वापस गसान मूव, यथ वत यह आय तथ वत यह वापस गसान। अगर यथ लिखियो तुम माइनस साइन indicates that ball retraces its original path। यह तथी वत गसान बे वापस यम वत और आमज आसान छ गो और आई एक वत गई अथ वत बे वापस गो योरच वेलोसिटी गई तो रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी -5 मीटर। देयरफॉर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल ये आसान है, सिर्फ गिवन कर mass of the ball is same, that is 2 divided by 10 into -5, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 ones are 2, 2 ones are 2, that is equal to -1 meter per second. This is the final momentum of the ball. Shabash. Now change in momentum, I mean what the momentum change in momentum, change in momentum का बराबर आसान फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मोमेंटम चेंज आस करें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है? -1, ठीक, मीटर पर सेकेंड। अत क्या करो माइनस, गो फार्मूला माइनस, शाबाश, 2 मीटर पर सेकेंड, that is equal to -1 -2, shabash, that is equal to -3, change in momentum kilograms meter per second. This tel kota shas momentum gasan change -3 indicates that the force is acting in the opposite direction, the force is acting in the opposite direction to the body। अब आप नीचे लिखेंगे ये माइनस साइन indicates that force is acting on the ball in the opposite direction of its motion। यानी यथ मोशन डायरेक्शन मज पकान फोर्स गो तथ हॉकी स्टिक के साथ अप्लाई मगर इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। कोता फोर्स गोस अप्लाई 3 kilograms meter per second, that is equal to the change in momentum। This is all about today, 4 questions are enough। एक एक करके आप डाउनलोड ये कॉपी डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी फिजिक्स आगे चलकर भी समझनी आसान होगी। जितने आप न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतनी आपको फिजिक्स समझने में आसानी होगी और आगे की फिजिक्स पढ़ने में भी आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।